हेलो स्टूडेंट्स अपना एकेडमी को आपण मान को आउथरे स्वागत। आज आम कंटिन्यू रखा आमर MCQ सीरीज। आज आम आमर MCQ सीरीज रे फंडामेंटल राइट उपरे जो MCQs अच्छी से सब आम डिस्कशन करवा। मु गारंटी देकी कहि पारबी जदि तुम वीडियो प्रॉपर्ली देखिकी बुझीब ताले फंडामेंटल राइट रु एमिति कोनोसी क्वेश्चन तुम एग्जाम रे आसीबो नाही जोटा आम ए वीडियो रे आज कवर करबा नाही। तो आम आम स्टार्ट करबा फर्स्ट क्वेश्चन सहित वेरी बेसिक दैट इज फंडामेंटल राइट आर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे बा को भाग रे रही फंडामेंटल राइट। तो एटा आम समस्ते जानी कि पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन अच्छी आमर फंडामेंटल राइट्स टा अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आगु गोटे सेकेंड एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू हुम सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स और ऑप्शन बी ओनली सिटीजन्स, ऑप्शन सी ओनली फॉरेनर्स और ऑप्शन डी नन। सेम जिनस ओडिया रे लिखा है तो आर करेक्ट आंसर हो कि सिटीजन एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट एनिमी एलियन। तो आमर जो एलियंस अच्छा एनिमी एलियंस एज इन जो कंट्री सिटीजन जहाँ सहित कि आमर कौन एनिमिटी अच्छी आम एनिमी कंट्री बोली कंसीडर करुचु से कंट्री सिटीजन्स को आम फंडामेंटल दबा ना। बाकी जिते सारा कंट्री अच्छा आम फंडामेंटल राइट मिल। अगेन फंडामेंटल राइट कौन अच्छी ना कि फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को मिले कि फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स मन को मिले। काली आमर जो वीडियोटा पोस्ट हम फंडामेंटल राइट्स उपरे सेटा को तुम देखी नब से डिटेल रे लिखाई कि को फंडामेंटल राइट सिटीजन्स मन को मिले और को फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स मन को मिले और को फंडामेंटल राइट बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स मन को अवेलेबल अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा फंडामेंटल राइट्स आर व्हाट एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड विथ रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन, अनलिमिटेड और नन। तो ए भितरु आर करेक्ट आंसर आसीजिबो कि फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड विथ रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन। एटा आमे जानिजे कि फंडामेंटल राइट्स केबे भी विदाउट रेस्ट्रिक्शन आसे नाही। रिजनेबल लीगल रेस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स उपरे लगा जाय पारिबो आउ सबु बेले लगा मध्य जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू व्हाट। आर्टिकल 20 अंडर रे को जिनस तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जाए। तो ऑप्शन ए रे अच्छी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन बी रे अच्छी कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ऑप्शन सी रे अच्छी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन डी रे अच्छी प्रॉपर्टी राइट्स। तो आर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कन्विक्शन फॉर offenses. Next question अच्छी आर्टिकल 14 guarantees what? Freedom of speech, right to property, freedom of religion, equality before law. तो आर करेक्ट आंसर आसीजिबो कि आर्टिकल 14 provides guarantee that is or guarantees equality before law. Next question अच्छी आर्टिकल 15 prohibits discrimination on what ground? Language only, property only, or religion, race, caste, sex, place of birth, or option D none. So again our correct answer आसीजिबो option number C. Next question आमे देखिबा 15(3) allows special provision for whom? SC ST, women and children, minorities or नॉन। आर्टिकल 15(3) रे स्पेशल प्रोविजन कहाँ पाई प्रोवाइड करि परिबो स्टेट बोली लिखा है। तो आर करेक्ट आंसर आसीजिबो वुमेन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट आम देखिबा आर्टिकल 16 एनश्योर्स व्हाट? फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और राइट टू प्रॉपर्टी और ऑप्शन डी नन। तो आर करेक्ट आंसर आसीजिबो ऑप्शन नंबर बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आसीजिबो आर्टिकल 17 एबोलिशेस व्हाट? स्लेवरी, चाइल्ड लेबर, ऑप्शन सी अनटचेबिलिटी और ऑप्शन डी डाउरी। तो आर करेक्ट आंसर आसीजिबो ऑप्शन नंबर सी अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 अंडर कौन अच्छी अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करा जायछि, एबोलिश करा जायछि। नेक्स्ट अच्छी आर्टिकल 19
guarantees how many freedom. Article 19 under amara citizens manku किछि freedom guarantee करा जाय सेटा केतेटा freedom दिया जायछि बोली एटी पचरा जायछि तो आर कोन हि जिवो ऑप्शन अछि ऑप्शन ए ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए 5 ऑप्शन बी 6 ऑप्शन सी 7 ऑप्शन डी 8 आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन बी 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए 6 टा फ्रीडम विषय कहा जायछि आर्टिकल 19 रे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कि फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 इंक्लूड्स व्हाट स्पीच एंड एक्सप्रेशन assembly association or all of the above मत प्रकाश करिबा सभा बनेबार स्वाधीनता संघ बनेबार स्वाधीनता या फिर सबु तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर डी all of the above next अछि article 18 abolishes what option A right to property option B freedom of trade option C none option D title except military and academics the article 18 abolishes titles except military and academics next हमें देखिबा article 21 guarantees what 21 अंडर रे कौन गारंटी करा जायछि ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी ऑप्शन सी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और ऑप्शन डी राइट टू वोट तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन सी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल property personal liberty next achi article 21A provides what right to property right to equality or none of the above or right to free and compulsory education for children between the age of 6 and 14 years तो आर correct answer आसी जिवो option D article 21A provides for right to free and compulsory education next हमें देखिना बा article 22 deals with what protection in cases of arrest and detention freedom of speech right to property equality before law इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला ऑप्शन हाँ अच्छी समानता अच्छी हाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन नेक्स्ट अच्छी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम पीरियड विदाउट एडवाइजरी बोर्ड विल बी 1 month 2 months 3 months और 6 months केते मास पर्यंत जन को डिटेन करिकी रखा जाय पारिबो प्रिवेंटिव डिटेंशन माने हम जो प्रोविजन अछि ता अंडर रे विदाउट एडवाइजरी बोर्ड्स माने सजेशंस और एडवाइस कहि परिबा हमें तार करेक्ट आंसर आसी जिवो 3 months तो 3 months पर्यंत कोन अछि आमे जन को डिटेन करिकी अटकी की रखी परिबा विदाउट एडवाइजरी बोर्ड 3 months ए जिबार करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट अच्छी आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स व्हाट आर्टिकल 23 अंडर रे कौन प्रोहिबिट कहाई अनटचेबिलिटी चाइल्ड मैरिज ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर और नन ऑफ द एबव तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन सी ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करे ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 24 कौन कहे कौन प्रोहिबिट करे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज और ऑप्शन बी अनटचेबिलिटी और ऑप्शन सी टाइटल्स और ऑप्शन डी नन ऑफ द above तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर ए एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी फैक्ट्रीज नेक्स्ट अच्छी आर्टिकल 25 guarantees what equality before law freedom of conscience and religion right to property और ऑप्शन डी none तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर बी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आसी जिबा आर्टिकल 26 guarantees what right to equality right to property और freedom to manage religious affairs और ऑप्शन नंबर डी none तो आर करेक्ट आंसर आसी जिबो ऑप्शन नंबर सी freedom to manage religious affairs next आसीबा 27 article provides what untouchability child labor none or tax on promotion of religion तो आर करेक्ट आंसर अगेन आसी जिवो ऑप्शन नंबर डी
tax for promotion of religion is being prohibited under Article 27. Next achi under Article 28 what is been that is been prohibited. Option A, religious instruction in state funded institution. Option B, freedom of speech. Option C, right to property. Or option D, that is none. The correct answer asijibo religious instruction in state funded institution. So Article 28 prohibits religious instruction in state funded institution. Next Article 29 protects what? Right to equality, interest of minority, right to property, or none. The correct answer asijibo Article 29 protects interest of the minorities. Article 29 protects interest of the minorities. जदि तुमको वीडियोटा एबे पर्यंत हेल्पफुल लगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड नोटिफिकेशनटा ऑन रखिए कहीं आम आगु को फंडामेंटल राइट उपर डिटेल वीडियो आने चाहूँ से तुम जमी मिस न कर जाओ. आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा. आर्टिकल 30 गिव्स माइनॉरिटी व्हाट काइंड ऑफ राइट? ऑप्शन ए, राइट टू प्रॉपर्टी. ऑप्शन बी, राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. और ऑप्शन सी, राइट टू इक्वालिटी. और ऑप्शन डी, नन. तो आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज मन को अधिकार दिए? आर करेक्ट आंसर आसीजिबो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन. नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा. आर्टिकल 31A ensures what? Article 31A ensures what? Option A, right to equality. Option B, right to property. Option C, none. Or option D, compensation for acquisition of minority institutions property. तार ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आसीजिबो ऑप्शन नंबर डी. अंडर कौन अच्छी तो माइनॉरिटीज मनकर कौन से भी इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशनल प्लेस को प्रॉपर्टी को जदि कौन से भी अथॉरिटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट जदि तांको एक्योर करिया पे ट्राई करछि तांको माने प्रॉपर्टी की नबा पे ट्राई करछन ताले तांको कंपेंसेशन दबा पई पड़िबो. एटा कोडी अछि 31A. Next आम देखा. Article 32 provides for what? Right to property, right to move to Supreme Court for enforcement of fundamental right. Or option C, right to equality. Or option D, none. The correct answer asijibo option number B, right to move to Supreme Court for enforcement of fundamental right. Next Dr. Ambedkar called Article 32 what? Soul of the Constitution, heart and soul of the Constitution, or cornerstone of the Constitution, or none. The correct answer asijibo option number B, heart and soul of the Constitution. Ambedkar कहले Article 32 होची heart and soul of the Constitution. Next question आमे देखिबा कि writs under Article 32 includes what? Habeas corpus, mandamus, certiorari, or all of the above. The correct answer asijibo option number D, all of the above. आ गोटे रीट अच्छे जोड़ा कि क्वारेंटो रीट्स मन का विषय जदि अगेन तुम डिटेल जानिया पई चाहूछ आम चैनल को सब्सक्राइब करनबो. नेक्स्ट वीडियो सी ऊपर ही आसिया पई जाउछि. आर्टिकल 33 आम देखिबा. आर्टिकल 33 एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स और Supreme Court to amend our fundamental rights. Or option C, none. Or option D, Parliament to modify rights rights for armed forces. तो आर करेक्ट आंसर आसीजिबो ऑप्शन नंबर डी. आर्टिकल 33 अंडर पार्लियामेंट चाहिए आर्म्ड फोर्सेस जो सब ऑफिशियल्स अच्छंती तांकर फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करि पारिबे, मॉडिफाई करि पारिबे. अगेन ये ओडिया रे लिखा है. नेक्स्ट आम देखी ना
कि आर्टिकल 34 डील्स विथ व्हाट? Right to equality or rights restricted during martial law, or option C right to property, or option D none. Options माने बहुत इजी अछि, इटा आराम से कैंसिल आउट करिके तमे जानि पारिबो. सॉरी, आर करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन बी राइट्स रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मार्शल लॉ. अगेन मार्शल लॉ जदि तुम कोन जानिबा पे चाहूछ आम नेक्स्ट वीडियो को निश्चय देखिबो. नेक्स्ट होची आर्टिकल 35 gives what? Supreme Court the power to amend fundamental right, or presidents the power to suspend our right, or parliament the power to make laws for implementing fundamental rights, or option D none. तो आर करेक्ट आंसर कौन है जीवो ऑप्शन नंबर सी. आर्टिकल 35 empowers the parliament to make laws for implementing fundamental rights. नेक्स्ट आम देखा किछि इंपोर्टेंट केसेस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, स्टार्टिंग विथ केशवानंद भारती केस 1973 establishes what? Right to property, right to equality, basic structure doctrine, or none of the above. तो आर करेक्ट आंसर आई थिंक आम ऑलरेडी आमर प्रीवियस MCQs रे डिस्कशन करि सचे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. सो केशवानंद भारती केस 1973 establishes basic structure doctrine. नेक्स्ट आम देखा मेनका गांधी केस 1978 expanded scope of which article? ये जो मेनका गांधी केस अच्छी जोटा कि 1978 रे आसीथिला को आर्टिकल स्कोप को वाइड करिथिला. ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी 14, और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 21. नेक्स्ट आम देखा इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण case is related to what right? Right to property, right to equality, right to freedom, or none of the above. ए केसटा मेनली रिलेटेड थिला जो इलेक्शन डिस्प्यूट थिला या फिर इलेक्शन को नेकरी इंदिरा गांधी को इलेक्शंस को नेकी जो क्वेश्चंस उठिथिला से रिलेटेड थिला. तो एटा कोन हे जिवो हमर मेनली आसी जीवो राइट टू फ्रीडम उपरे केस थिला. बिकॉज जेतु इलेक्शंस रे जहाँ भी माने ऑब्वियसली जो माने पिटिशनर जे थिले राज नारायण समानकर आर्गुमेंट ऑब्वियसली थिला कि इलेक्शन से जो सब इश्यू होची एटा काइंड ऑफ आम फ्रीडम लोकंकर फ्रीडम सहित मध्य इंटरफेयर कर होची काहे आम फ्रीडम एटा भी हमको अलाउ करे कि आमे फ्रीली आम इच्छा रे वोट देकरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस रो आमे लीडर को बाछिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा मिनर्वा मिल केस टॉक्स अबाउट बैलेंसिंग व्हाट? Option A fundamental right and people's right to property, option B fundamental right and DPSP, option C fundamental right and religion, or option D none of the above. तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल राइट एंड DPSP. सो मिनर्वा मिल केस टॉक्स अबाउट बैलेंसिंग फंडामेंटल राइट विथ DPSP. नेक्स्ट आम देखा साहवानु केस इज रिलेटेड टू व्हाट? राइट टू मेंटेनेंस अंडर आर्टिकल 21, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द above. तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर ए राइट टू मेंटेनेंस अंडर आर्टिकल 21. नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखीदबा कि राइट टू प्राइवेसी पुट्टस्वामी केस रे जो 2017 रे एटा को डिक्लेयर कराइतला एज पार्ट ऑफ व्हिच आर्टिकल? एटी क्वेश्चन देछि. तो ऑप्शन रे अछि आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, और ऑप्शन डी नन ऑफ द above. तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21. तो आमर राइट टू प्राइवेसी एटा पार्ट होची आर्टिकल 21 रो. एटा को केस रे डिक्लेयर हेतला? पुट्टस्वामी केस 2017. नेक्स्ट क्वेश्चन होची राइट टू इन्फॉर्मेशन इज लिंक्ड टू व्हिच आर्टिकल? Article 21, Article 14, option C none of the above, option D Article 19(1)(a. तो आर करेक्ट आंसर आसी जिवो राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19(1)(a.
ए रे अच्छे। नेक्स्ट अच्छी राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इज लिंक टू विच आर्टिकल, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और नन ऑफ द एबव। तो आर करेक्ट आंसर आसीजिब आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 अदर राइट्स भी आसीजिब जमती कि राइट टू एते आमे देखिनेले क्लीन एनवायरमेंट, देन राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू शेल्टर, एमिति राइट्स भी आसीजिब आर्टिकल 21 अंडर। एबे आमे देखि नबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट टू स्पीडी ट्रायल लिंक टू विच आर्टिकल। ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी नन ऑफ द अबव, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19। आर करेक्ट आंसर मु तुमको ऑलरेडी कहि सारिछि। आर करेक्ट आंसर अब ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर आर्टिकल 21। जदि तुमको ये वीडियोटी हेल्पफुल लगी ताहले चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करब, लाइक करदेव ये वीडियो को सांग मान सहित शेयर करनब। आउ ये फंडामेंटल राइट एटा आई थिंक 40 और समथिंग 40+ आई थिंक MCQs थिला। आपर आमे फंडामेंटल राइट DPSP एंड अदर टॉपिक रे मध्य आहुरी अधिक MCQs आनिबा पई जाउछु। आउ जदि तुमको यही MCQ सीरीज रो PDF दरकार ताहले कमेंट करदेव, मु तुमको PDF प्रोवाइड करदेबी। एंड थैंक यू।